प्लान हो रहा था तो हम लोग दिल्ली समर्थक समूह दिल्ली सॉलिडरिटी ग्रुप प्लान कर रहा था कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और दिल्ली सॉलिडरिटी ग्रुप इमीडिएटली कोई भी कुछ आपदा होती है तो उस पे एकदम से वो एक्शन लेते हैं। देन राखी का मेल आया, इमीडिएटली कुछ प्रोसेस चल रहा था और जिसमें कि काफी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो हम लोगों ने इमीडिएटली रोका कि नहीं, ऑलरेडी एक मीटिंग प्लान हो रही है तो हम लोग सब उसी में साथ देंगे। तो फिर आज की मीटिंग के लिए हम लोगों ने सबने मतलब दिल्ली समर्थक समूह से कुछ साथियों ने मुझे भेजा है और ये भी बोला कि अगर वहां पर जो भी निर्णय तय होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो दिल्ली समर्थक समूह दिल्ली सॉलिडरिटी ग्रुप इसको लेके आगे जाने के लिए तैयार रहेगा और मतलब वो मुझे लगता है कि सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे इस इश्यूज में। तो हमारी तरफ से ये आह्वान। Okay, I'm Gurinder Kaur and I'm from Sathi, which is a society for administration of telemedicine and healthcare informatics, and my colleague Dr. Gokia is also here. I want to say three things. One is that I think the group needs to be congratulated, whoever has taken the initiative to call this meeting and get everybody thinking in terms of coordination. I personally feel if a kind of a committee or some sort of group can be structured and they can carry forward the outcomes of this meeting, and that group should be given a mandate, what should be the role that they should be playing. And I would suggest that have at least a 3 to 5 year perspective for the work of this group. Please don't finish it as soon as the emergency phase is over. Because right now everybody is excited and everybody is feeling the pain and the trauma. So we all want to jump into the fray. And I think each one should think very carefully whether we want to involve ourselves in the emergency phase and then that's it, we want to stop it. Because in the emergency phase is not more than 4 or 5 or 6 days in even the most acute cases. The moment you find the rescue work is over, practically the emergency phase is over, begins the relief phase after that. So there are specific activities related to the relief phase, followed by short-term development phase, followed by mid-term development phase, and followed by long-term development phase. For each of these phases, there are critical activities which are widely accepted, which have been identified and they are in practice. So we should, I feel each of us should think very carefully up to where we want to go and give our commitment accordingly. And I think in that sense perhaps we'll be able to give our best. The role that this group could play, I feel, is one of information exchange, gathering the information, collating it, disseminating it, and exchange. I think anybody should be able to, not only people here but others also, should be able to tap into either our website or whatever mechanism we want to use for sharing and get information on who's doing what is needed there. If any agency or individual or whatever social formation wishes to do, take some action now or a month later or whenever. I think that there's a real danger in the emergency and relief phase for overfunding and over response, too much. And then I've seen kind of since 1989 I've kind of worked in almost all the major disasters in South Asia, and I've seen that a lot of material not only goes waste but the wrong kinds of things reach there. So somehow if this group could help us to avoid that we send materials which are not getting wasted or duplicated, or we are sending the wrong kinds of materials, so that if we can avoid that, itself will be a very major contribution for the coordination committee, whatever we want to call it. But definitely if we want to take forward today's discussion, then some sort of structure would be needed. And then I think Vijay Pratap has already said that the next step would be, will there be a workplace for such a group, and who are the people who would be able to give their time to those kinds of tasks which need to be done, and how big or small will that place be, and what kinds of facilities would be there. As far as Sathi goes, we are actually concerned to work, say, perhaps a month from now. We do not want to get involved because we just don't have the strengths which are needed to work in the relief phase or even in the emergency phase.
we had worked with, actually Sathi had worked very well in the post-tsunami phase in Tamil Nadu, and they did some very pioneering work and in the field of telemedicine, and we focused on telemental health. And that intervention is self-sustaining and is, anybody can go and visit that in Nagapattinam and other parts of Tamil Nadu even now, and that the workers who were trained, and that's still going on because we chose to make a long-term intervention at a particular point of time. So I think each one has to decide. I'm not saying that's the only way, but then we partnered with a lot of local agencies who are now sustaining that project, and there is no funding, and still the work is going on. Funding in any case was very, very limited. So I think the last thing I want to say is that perhaps this group can play another role, that of documentation of best practices during different stages of the emergency in Nepal. If we can look at the research and documentation side of it, and in that sense I was talking to a gentleman outside asking him what his research institution, whether they have any thoughts on this, and then this group, the core group or whatever you want to call it, the facilitation group, could perhaps be in touch with universities and others and giving information and ideas, and subjects could come up for taking up for research. Because as we all recognize it, that globally and particularly in South Asia, disasters are increasing in number, in frequency, and also in intensity. And that the future also looks the same. It's the same in the sense that there are going to be more frequent disasters and more intense disasters. The damage is going to be much, much more intense than in the past. So if this is what the scientific data shows, and this is going to be the trend, then what sort of responses can we make now which will guard against similar events? Maybe it's not an earthquake, maybe it's something else. So can we be looking at preparedness as part of the whole disaster response mechanism? Thank you. Sorry, I'll just intervene. Just add a little point about Gurinder because you mentioned about the things. There is a response which was created in Sri Lanka after the tsunami called the Sahana project, and which was actually very helpful in coordinating all the things. And I think Nepal has already taken it up, but I think maybe we should push it. Just one moment. I think Mr. Pandey from Nepal wants to speak. Well, I am from Nepal, and I have lived through two disasters, earthquake disasters, both of 1934 and of this year. I've lived through that. One thing, of course, everything that you have all covered was excellent. Let it be implemented by coordination with the Nepalese team also. It has got to be done. But one thing is this, there was that earthquake in 1934, and Nepal is earthquake prone. We knew that, but still nobody took the long-term view. So now when you are reconstructing the houses of the people, we have to be much more careful, because somebody has already raised. Next may not come after 80 years, may come even after 80 months, nobody knows, or even after 80 weeks, because it is vulnerable. Of course, there may be some pent up and all that, may not happen immediately. I myself, my family has made the mistake. We just moved to a high-rise apartment, all my brothers and myself, and when I was there, it shook like that. The plasters are gone, but the structure may be okay. I mean, we also did that mistake because we thought that, well, this won't happen to me. So in Nepal now, from this one, not only in Nepal, in all the earthquake zone, we have to make the houses belong to the people. That is their thing. It should belong to them, and it should be built in such a way that not a luxury, but it should be easy to run, and also it should be their owner property that they will be able to use it for the rest of their life. So that also is one point we have to see. At this moment, of course, your priority is absolutely all right. I'm not saying that this should be given a priority, but this also should not be neglected, because earthquakes or other things can again come into Nepal, or in that region, in this region, Nepal, not Bihar and all this sort of thing, this area can come. So in that area, what sort of housing it has got to come, that has got to be emphasized now. Let's not repeat the same mistake again. Thank you very much. I think earlier in the first session, the question of CSR came up. Pratyush is here from Coca-Cola and would like to share some of his thoughts.
Hi everyone. I was just having a word with Rakhi when she put up this question to me, and I would just like to inform everyone that interimly on Sunday itself, Coca-Cola sent out, we handed over 10,000 cases of 1 liter Kinley bottles, and the Nepal plant is already working at looking into where and how we can deliver more packaged water for the victims. Short term as of now, and we are internally having our own plans that we are working on, and eventually when the plan is concretized we would share it with this group definitely. And I would obviously request Rakhi to keep us posted on the work plan here so that we can sync it up with our own plans and see how best we can support. Yeah, Rakhi also did want us to reach out to our other corporate partners, which we will definitely be doing. Thanks. Are you airlifting the water? Is the Nepal plant the only one that's going Can we come to these details later? He just has a question because Pratyush has to leave. Yeah, as of now, the bottling plant there has been able to provide, but eventually we are trying at other alternatives also. As of now, officially we have just grounded the operations there, but then I'll get back on that. ये राखी में मैं बस हाफ मिनट में मैं रिजवान अहमद जामिया से खुदाई खिदमतगार से हूँ और मैं खुदाई खिदमतगार की टीम से जामिया की तरफ से जो है एक वॉलंटियर टीम तैयार करता हूँ और उसका मेल आपको मैं करता हूँ कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फ्री हैं या एग्जाम हो गया है तो शुरू करके और हम भेजते हैं जैसा आपको वो तो एक ही जगह राखी जी एक मेरा But Sukti बोलने उसके बाद we'll come back to organizing ourselves. She wanted to share. मैं एक जानकारी अरुण जी के जाने से पहले देना चाह रहा था। अरुण जी हो गया बाद में अब ये बोल लेंगे तो गुरिंदर जी ने जो सवाल उठाए उस पर 2 मिनट। Hi, Namaskar. My name is Sukti. I'm a Nepali human rights lawyer that's here in India. I work with an organization called Nazdik, and we do legal trainings. We're a legal empowerment organization. And just 2 points. I'm sorry I missed the earlier part of the session, but one is I have some good friends that are working in Kathmandu with the Kathmandu Living Labs. I don't know if that came up, but they're doing very important mapping, and so we're providing direct kind of resource support from them from Delhi. So information, for example, I've been working with the American Nepal Medical Foundation to do surveys of facilities, hospitals, both in Kathmandu as well as right outside of Kathmandu, to understand supplies and inventory. We are then taking that information and inputting it into the Living Labs database and able to populate. So there's a lot of work that students and others can do here in Delhi to support the Living Labs initiative. The other thing is, I don't know where we are in the process, but we have some concrete kind of objectives that we're trying to do as a group, one of which is related to ordering inventory and supplies here in Delhi through and other cities in India, direct manufacturers on issues of implants, blood issues, masks, those kind of things related to medical supplies, and then having them being shipped directly to hospitals in Nepal that we have direct contacts with physicians and nurses and things. So that kind of monitoring of where the money is going, we can verify that, which we know is a big hurdle with a lot of different programs. So I just want to put my name out there for that, and look forward to kind of breaking into more practical discussions about what we're planning to do. ये जो ग्रुप्स वाली बात आ रही थी उस पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी ग्रुप्स में डिवाइड ना किया जाए। ये कमरा अपने पास 9 बजे तक के लिए है, और जो जनरल नेचर के सवाल हैं जिस पे सबको अभी वो स्टेज नहीं आई है कि हम स्पेशलिस्ट वर्किंग ग्रुप बना दें, ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है कि उसमें महिलाओं के बारे में और जेंडर इश्यूज के बारे में, दोनों के बारे में समझ रखने वाले किसी ग्रुप का सिग्नेचर नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप फैज खान आप बात करके और संगत और जागोरी इनमें से कुछ ये ऑर्गेनाइजिंग टीम जैसा जो सिग्नेचर हैं
उनमें से किसी संगठन ने विड्रॉ नहीं किया है, तो उन सबको अगर ये सदन को किसी पे एतराज नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि वो सब नाम रहें। इसके अलावा जो लोग बोले हैं, जैसे गुरिंदर जी ने कहा कि वो पोस्ट इमरजेंसी फेज में एक्टिव होना चाहेंगे साथी के लोग, पर मेरी दरखास्त होगी कि वो अभी से इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में हो और इसका पूरा फंक्शनिंग एज थिंग्स विल अपफोल्ड, those who want to work only in the emergency phase will step back and you will be in the forefront, but we all be together in exchanging notes, in relating to younger people. हम लोग को तब से देख रहे हैं 77 में जो टर्नाडो आया था उसके बाद से लगातार कई लोग हैं जो यहाँ मिलते हैं, लाजपत भवन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप से आप आई एज्यूम कि हम उसको मान सकते हैं एज को सिग्नेटरी फॉर फ्यूचर वर्क, और संगत जागोरी से आप बात करके अगर अभी आप इस पोजीशन में हैं तो नहीं तो वो हमें बता दें। साथी से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, उसी तरह से हिमालय नीति संवाद से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। भुवन पाठक जी अपने साथियों से बात करके उसके ऑर्गेनाइजिंग में, और यहाँ अन्य जो भी संगठन है, लाजपत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की ओर से आप हो सकते हैं, या साउथ एशिया फ्रेटर्निटी की तरफ से सत्यपाल जी, एशिया साउथ एशिया, ठीक है। तो हम ये रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन अगर नोट्स में ये बात रहे तो उसके अलावा खुदाई खिदमतगार के साथ ही चले गए, पर वो हर चीज में अपनी शामिल रहते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो भी सिग्नेटरी में आई थिंक ये अभी थोड़ा हम काम की भी बात कर ले विजय जी, क्योंकि लेट अस अज्यूम कि जो यहाँ हैं अगर वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस, सिग्नेटरीज हैं या नहीं है, मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ 50 सिग्नेटरीज, कुछ कोर कमेटी जैसे आप लोग हैं वो कोर कमेटी में रह के आप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस यू शुड जस्ट साइन on any call letter that goes up, but I think it's important कि थोड़ा सा हम जैसे उत्सुक है सब साथी ये बात करने के लिए कि काम कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे हाउ डू वी कनेक्ट टू ईच अदर, अगर उसकी और हम थोड़ा बढ़े। नहीं, उसमें क्या है कि जो डोनर एजेंसीज और प्रोजेक्ट्स वाले संगठन हैं उनको तो ये दिक्कत नहीं है कि उनका नाम रहे या ना रहे, उनका अपना प्रोजेक्ट है, पैसा है, एक सेंस ऑफ बाउंड्रीज है, सेंस ऑफ प्रायोरिटीज करने में उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं, हायर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे ग्रुप के लिए ओनरशिप एक बड़ा सवाल है, और उसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा तो कोई भी 5 लोग जो ज्यादा समय देंगे वो नेचुरल एक स्टीयरिंग कमेटी उसकी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितने संगठनों के मैंने नाम लिए वो सब रहे ही, और तमाम जो प्रवासी संगठनों के नाम आपने देखे होंगे आमंत्रण उसमें, वो एसोसिएट मेंबर उसके नेपालियों के, क्योंकि हम उन पे ये बर्डन नहीं डालना चाहते, वो अपने अपने इलाकों में अपने रीजन्स में काम कर ही रहे हैं, तो वी एज्यूम कि दे विल रिमेन आवर एसोसिएट मेंबर्स। और इसके अलावा आपके पास कोई भी नाम हो तो आप राखी जी को ईमेल कर दें, या ये जो हमने बनाया है आईडी, इसका हम जो इसकी कमेटी में होंगे लोग उनके पास उसका पासवर्ड वगैरह रहेगा, और उसके हिसाब से काम करेंगे अपन लोग। दूसरा ये सुझाव था कि मतलब अब से लगातार इसमें मिलते रहने की जरूरत होगी, और इस बीच क्या क्या करेंगे वो हम ईमेल से करते रहेंगे। 5 को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन है लैंड एक्विजिशन के सवाल पे, तो क्या हम 4 को मिल सकते हैं? यहाँ अभी चेक नहीं कर पाए क्योंकि पहले हमने 5 का किया, फिर दिल्ली फोरम के साथियों ने याद कराया कि 5 को तो देश भर से लोग आ रहे हैं प्रदर्शन के लिए, तो 4 को यहाँ पता करके, और सुविधा का समय आज ही की तरह 2 से 9 बजे हमने बुक कराया था, तो इसी तरह से बुक कराने में अच्छा रहेगा, ताकि इनफॉर्मली जो शाम को नहीं आ सकता वो थोड़ा देर से आ जाएगा, लेट इवनिंग जो पहले आ सकता है और आके जाना है। तो इसी तरह से 4 तारीख को मंडे होगा, तो इस पे
कोई खास बड़ी तिथि ना हो तो 4 पे हम फैसला कर लें। 4 पे छुट्टी का दिन है। किस चीज की छुट्टी है? बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ, तो 2 से 9 तक तो बात कर, वो समय बुद्ध पूर्णिमा खीर तो सुबह ही खाई जाती है अगले दिन। थोड़ी सी यहाँ भी लेते आइएगा अगर खीर बनेगी घर में। चलिए आगे चलाइए। आई थिंक क्योंकि सारे उत्सुक हैं कि काम कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो थोड़े से पॉइंट्स आए हैं कि मे बी वी नीड टू, जैसे आपने भी कहा था विजय जी, वी नीड टू फिगर आउट कि ऑफिस और कलेक्शन सेंटर उसमें आई थिंक एक सजेशन। एक सेकेंड, आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग बुला सकते हैं क्या CSDS से बात? मेरा एक सजेशन था जो काफी देर से मेरे दिमाग में था, क्योंकि उन्होंने सारी ये टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज ने, हमारा काम हमने जो देखा है, हमारा मेन प्रोजेक्ट जो सुनामी के बाद भी और भी जहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी आर एन IT बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच कनेक्टिविटी इज द मेन इशू, और बिना कनेक्टिविटी के हम बेकार हैं। तो नेपाल में 16 घंटे लाइट बंद रहती थी नॉर्मल डे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो कैन वी एज अ ग्रुप एम्फोर्स अपॉन द एयरटेल वगैरह, उन्होंने कुछ 2 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि हम आपको फ्री वो दे रहे हैं। मेरी तो एक बात नहीं हो पाई, मैंने जितने भी नंबर लगाए हैं हमेशा वो ऑफ हुए। वहाँ पे ऑन एन अर्जेंट बेसिस to set up telecommunication towers or something is something which we should try to enforce on the through CSR or whatever is my suggestion, which we should do as a group. तो कमिंग बैक टू सम ऑफ द इमीडिएट टास्क, एक तो आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी की भी ज़रूरत है, क्योंकि सारे जो हैं साथी एक ही जगह कलेक्शन सेंटर में करना चाहते हैं, सब अपने अपना भी कर रहे हैं। सो आई थिंक रीइटरेटिंग बार बार कि सब स्वतंत्र है, अपना अपना काम जैसे कर रहे हैं वो करें। एंड एज यू कैन कनेक्ट, आई मीन दिस इज मोर लाइक अ क्लियरिंग हाउस, एज यू कनेक्ट you feed into this your experiences as well as the information that you have and any help that you need. लेकिन फिर भी जो अगर एक collection center की ज़रूरत है, if we need to coordinate and figure out not just the procedures, मगर कहाँ पर मतलब staging ग्राउंड्स जैसे हो कि यहाँ पे कलेक्शन हो तो वो गोरखपुर के रूट से जाएगा कि वो रक्सौल के रूट से जाएगा, और रक्सौल के रूट के लिए तो खैर कोलकाता में साथियों को बोला जा सकता है कि वो वहाँ से जो है उसको कोऑर्डिनेट करें। जो लोग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ भेजना चाहें, क्या हम उसे दिल्ली में या यूपी में उसको कलेक्ट करें, दिल्ली वाले संगठन दिल्ली में कलेक्ट करके फिर हम क्या गोरखपुर से भेजें, जैसा कि एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स के एसोसिएशंस भी उनके पास आए हैं। सो परहैप्स वी कुड टेक एडवांटेज ऑफ दोज काइंड्स ऑफ वॉलंटियर ऑफर्स वेयर दे आर वेविंग ऑफ the charges and volunteering their containers and their transport businesses as a contribution to this relief aid. So maybe वो करके we need to just figure out, and we do need to form छोटे मतलब कुछ वर्किंग ग्रुप्स या फैसिलिटेशन ग्रुप्स जो कुछ लॉजिस्टिक्स को देखें, कुछ जो लिएजॉन कर रहे हैं विद द MHA वो अपडेट करते रहें, कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत जो पड़ेगी तो थोड़ी सी who will sort of be in charge of volunteers. Radhika has already offered her time as a whole timer. The Jamia students and Khud Mai Khidmatkar are already offering volunteers as required and as available. तो इन सबको coordinate करने के लिए थोड़ी सी ग्रुप्स की ज़रूरत होगी। और जैसा कि ऑलरेडी एक ऑफर आ गया है कि वेबसाइट तो वो बना देंगे, लेकिन वो वेबसाइट में कंटेंट डालना और उसको अपडेट करते रहना, उसकी एक छोटी सी वॉलंटियर्स की ग्रुप चाहिए होगी। और फिर जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, बार बार जो बातें आ रही हैं कि यहाँ के संगठन कोऑर्डिनेटेड तरीके से अगर बॉर्डर तक पहुँचा देते हैं सामान, तो वो कोऑर्डिनेटेड ढंग से बॉर्डर से आगे कैसे जाएं, तो वो जो फीडबैक और कुछ सर्कुलेट भी हुआ है NGO फेडरेशन की तरफ से, वो हम ईमेल में भी फिर से सर्कुलेट कर देंगे। जिसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सर्कुलेट कर दें, मगर इसको कैसे थोड़ा फ्लेक्सिबल येट कोऑर्डिनेटेड ढंग से करें ताकि नीड बेस्ड रिलीफ पहुंचे जहां
ज़रूरत अनुसार पहुँचे ताकि वो वेस्ट ना हो और प्रोसीजर्स के अनुसार पहुँचे ताकि वेस्ट ना हो. So Malika, everyone who wants to speak, just give your names and then okay. But Malika raised her hand first. I'm Malika from South Asian University. I don't have that much to say, but just to kind of add on to what you said, Rakhi, that volunteer-wise, we can provide some volunteers in Delhi end, but we actually have a kind of 30-40 Nepali students who are staying here till the exam, which is next week, and after that they are going to Nepal. So in terms of coordination in there, I mean, they are there in the semester group, and many have expressed interest to be part of this kind of connecting community. So anything that is required in Kathmandu, and many of them actually come from affected villages outside Kathmandu as well, and they are locally knowledgeable, has contacts, and so they would be very keen to contribute towards that. Two suggestions, Rakhi ji, from what you said. I think as it sounds, as I said earlier, probably it will be very useful. एक तो जो need वहाँ पर जो already नेपाल में लोग या लोग already मौजूद हैं, वो physically need assess करें, जो भी जिनके भी यहाँ पर contacts हैं, वो need assess करके बताएं और वो need आपके through share हो सके पूरे larger group से A and B कि जो भी जब सब लोग अपने दायरे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, and that can be probably as a table we can make a list of the contact persons and organizations and the nature of work that they are doing as present, in the relief work, and send it to everybody, and then people can contact, wherever they want to. तो वो बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाएगा हम सभी के पास, और हम जहाँ जिसके थ्रू भेज सके और वो उसको भेज सकेंगे. मेरे सामने दो सवाल हैं. एक तो ये है कि जो चूंकि इसमें ज्यादातर दिल्ली और उसके आसपास काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली के बाहर जो लोग इस काम से जुड़े हैं, वो इस फोरम के मतलब इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे, तो उसका क्या तरीका होगा? क्योंकि वेस्टर्न यूपी में काफी लोग सक्रिय हैं. कल मेरी बात पिंगलवाड़ा के साथियों से हुई है पंजाब में. अमृतसर पिंगलवाड़ा सोसाइटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो उन्होंने कहा है कि हम तुरंत सामने आएंगे काम करने के लिए. और रण सिंह आर्य जो जीवन विद्या के साथी हैं हमारे, वो पूरा वेस्टर्न यूपी में उन्होंने कल से ही लोगों से बात करना शुरू किया है. हरीश स्वराज के साथियों ने बहराइच से सामान भी शायद कल इकट्ठा करके भेजा है, क्योंकि जो आप कह रही थी कि रक्सौल के अलावा बहराइच वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा अप्रोचेबल है, और उसके थोड़ा और वेस्ट की तरफ आते हैं तो जो महेंद्रनगर जुड़ता है रास्ता बनबसा वाला, वो और ज्यादा पश्चिम की तरफ जाने वाला नजदीक का सबसे नजदीक का रास्ता है. अगर और उससे थोड़ा और पश्चिम की तरफ आ जाते तो बेतड़ी वाला जो रास्ता है, मैंने चूंकि बेतड़ी हमसे बिल्कुल नजदीक का इलाका, मैंने पता किया कि वहां से भी रास्ता खुला हुआ है. बेतड़ी से जो सीधा काठमांडू जा रहा है उसमें नुकसान कम हुआ है बनिस्बत जो रक्सौल से जाता है उसकी अपेक्षा. तो मुझे लगता है कि जो देश के बाकी हिस्सों में, खासकर उत्तर भारत में जो और प्रोसेसेस चल रही हैं, वो इस फोरम का हिस्सा बने. एक तो वो जरूरी चीज है, और दूसरा मुझे लगता है कि जो धार्मिक संस्थान है देश के, वो चाहे अखाड़े हैं, चर्च हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं, इन सब लोगों को हमको अप्रोच करना चाहिए सुनियोजित तरीके से, और खासकर जो कुक्ड फूड सप्लाई करना है. जो इमीडिएट जरूरत है इस समय, जो खबरें आ रही है नेपाल से कि खाया जाने लायक भोजन और पानी सबसे पहली जरूरत है, खासकर गाँव में. क्योंकि जो वैली के बाहर के जिन गाँवों में नुकसान हुआ है, वहां से जो जिन साथियों से हमारा संपर्क, जैसे हमारे नजदीक वाले में कि घर पूरा का पूरा गिर गया, राशन पूरा दब गया और पूरी फैमिली बाहर है, और उन गांवों तक सड़क नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और उन तक अभी शायद हमारी टीआरपी बेस्ड मीडिया पहुंची तक भी नहीं है. तो उन जगहों पर जाने के लिए चूंकि मैं देख रहा था कि नेपाल के जो एनजीओ कोऑर्डिनेशन के लोग हैं वो लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो बात की ही होगी, एक्सनेट के साथियों ने और बाकी लोगों ने. तो मुझे लग रहा है कि और प्रोसेस को कैसे इसका हिस्सा बनाएं, ये सजेशन के तौर पे एक है. और सरकारों ने, मुझे लगता है कि दोनों यूपी और उत्तराखंड की सरकार और खासकर बिहार की सरकार, इन तीनों सरकारों से बात होनी चाहिए. यूपी की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, उत्तराखंड की सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, बिहार की सरकार तो अपने यहाँ खैर इन्वॉल्व है. तो दोनों सरकारों से बात करने के लिए अलग से, जैसा विजय जी ने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों को खास इसी काम पे लगना चाहिए जो यूपी की सरकार से और उत्तराखंड की सरकार से बात कर सके इस मसले पर. जस्ट आई वांट टू ऐड टू हिम. अभी जो उन्हें आप नाम अपना, अच्छा, जो भी साथी बोला करें. मेरा नाम नेहा है, मैं स्फेयर इंडिया से हूँ. अभी जो सर ने ऐड किया ना, मैं आपकी बात को जस्ट ऐड करते हुए बोलना चाहती हूँ. अभी मुझे मैसेज आया है कि ऑलरेडी जो आप कह रहे हैं ना, यूपी की सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि स्फेयर इंडिया नेशनल कोalition है और हमारे स्टेट लेवल पे IAGs होते हैं, इंटर एजेंसी ग्रुप. अगर आप लोगों को आइडिया, आप भी जानते होंगे. तो अभी IAG यूपी की मीटिंग हुई है रिलीफ कमिश्नर से, और उन्हें इंफॉर्मेशन दी है
कि गवर्नमेंट आरसी ऑफिस अरेंज कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल टू नेपाल। और गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है ड्राई फूड आइटम्स 2 lakhs पैकेट ब्लैंकेट्स टेंट्स 50,000 स्मॉल एंड 50,000 लार्जर बिग साइज मेट्रेसेस बिस्किट कोरोनेशन टैबलेट हाइजीन किट। मुझे अभी ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो मैं आपकी बात से आपको बताना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी आईएजी यूपी ने रिलीफ कमिश्नर से बात कर ली है और ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। सो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह रही थी, स्पेयर इंडिया ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है जो इस सब चीज़ों पे कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इस फोरम से व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन वी विल गेट, वी विल सी हाउ वी कैन कोऑर्डिनेट बेटर, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। ऑलरेडी हमारे जो मेंबर एजेंसी एक्शन एड, MSF, सेव द चिल्ड्रन, केयर इंडिया, यूनिसेफ, ऑल ऑफ देम वो भी इसी सब पे काम कर रहे हैं और ये फोरम भी उसी सब पे अगर एक्टिविटी करते जाएंगे हम साथ ही साथ में, तो बहुत सारा जैसा शुरू से बात की जा रही है रिलीफ मटेरियल का डुप्लीकेशन ना हो। तो इसलिए अगर हम एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक आप जो कह रहे हैं कमिटी बना के उस पर वर्क करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो मैडम अभी कह रही थी गुरविंदर मैडम रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, सो ऑलरेडी इंडिया में हमारा एक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म एग्जिस्टिंग है हु इज वर्किंग इंटायरली ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ऐसा नहीं है कि ये फोरम क्रिएट होगा और जैसे ही नेपाल का रिस्पॉन्स खत्म होगा तो वर्क नहीं होगा। वी आर वर्किंग मोर ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दैट इज प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद NDMA फॉर पॉलिसीज, development of policy guidelines and all. So that I just want to add, and we can be in touch with all of us so that email pe we'll just share that. Ambassador Rajan has to go, sir, if I could request you to share your thoughts and help us. Thank you very much. You know, my name is KV Rajan. My wife and I had a 5-year-long love affair with Nepal when I was ambassador there, and that love affair is continued. So a lot of people have been in touch with us over the last few days, both from India and from abroad, wanting to know how they could help. So I was very happy when I was invited to this group and introduced to this wonderful initiative that you have taken. I think this group has a lot of potential, and Nepal's needs are so huge, and they will continue for the next several years. I think we should plan something which would enable this group to achieve the maximum possible contribution that it can make to Nepal, and it need not be sort of overweighted in terms of the priorities of the day, because these priorities will keep changing. Today the priorities might be food, water, etc. Tomorrow it might be construction, day after tomorrow it will be education of children who are particularly vulnerable because of this tragedy, or the issue of protecting the woman who might be particularly vulnerable, and so on. And still later on, not very far down the road, let's not forget that Nepal's economy faces some very serious long-term dangers. So even when if this relief is organized and so on, if tourism is not repackaged and reinvented and reimagined in a particular way, then that will also be a major problem. How does Nepal manage? So my thinking has been that what you really need today is a kind of coalition or alliance of business, NGOs and think tanks to work on a very major project which will last for at least 3 to 5 years, which will be to rebuild Nepal. So this project of rebuilding Nepal will have very conscious contributions, well-organized contributions from all these 3 streams: NGOs, the business community, we've just heard about CSR and so on, but can be organized in a different way, and think tanks. And we then have this open-ended group, and we try and get the best possible people to make the best possible contribution, ensure that there is as good coordination as possible. But unless we do that, I'm afraid, as the lady over there was saying a little while ago, that after this initial phase is over,
we might forget that the real needs still remain. So let us think in terms of a major project, rebuilding Nepal, which will have these three streams. They will work in coordination with the central government, the state governments, etc. But it should be something which captures the imagination of people, motivates them, gets the top, for example, business leaders, the best possible NGOs and think tanks also involved. Because they will respond if there is a grander vision behind this and something that is necessary. Nepal should not fade away like some other countries which have suffered major earthquakes or disasters and not sort of be reborn as one of the star countries in this region. Thank you. दोस्तों, जो राखी जी ने एजेंडा रखा है उस पे अब 1 by 1 फैसले करने शुरू कर दें। सबसे पहले फिजिकल, कई बार हाथ उठा चुका हूँ। सॉरी, आप बोले किधर उधर